Hello student, today we will compare the EMF of two different primary cells using potentiometer. Here you can see that we have some apparatus which will use in this experiment. So this is potentiometer, one-way key, ammeter, rheostat, potentiometer, Leclanché cell, Daniell cell, two-way key, galvanometer, resistance box. This kind of apparatus we will use in this experiment. Here first we will measure the EMF of two given primary cell, then after we will connect the circuit. You have to remember that EMF of battery emitter should be greater than EMF of two given primary cell. So first we will measure the EMF of given primary cells. For that we need the voltmeter. Now with the help of voltmeter we will connect the red wire to the positive terminal of Daniell cell and black wire to the negative terminal of Daniell cell. Here you should remember that the zinc rod is always should be negative. EMF of Daniell cell is 0.7 volt. Now we will measure the EMF of Leclanché cell. As in Daniell cell, here also the red wire should be connected to the positive terminal and the black wire should be connected to the negative terminal. So as we know that the negative terminal is always the zinc rod. Here the voltage is 1.3 volt. So Leclanché has EMF 1.3 volt. Now I will show you how to connect the circuit. As you can see that here I already arranged all equipment as in circuit diagram. First of all we have to connect the positive terminal of battery emitter to the potentiometer. Then after we will connect the positive terminal of both the primary cell to the potentiometer. Zero of potentiometer, and the negative of both primary cell should be connected to the two-way key, and the common terminal of the two-way key should be connected to the galvanometer. Here we will connect the galvanometer to the negative one, and the positive terminal of galvanometer should be connected to the resistance box. And at the end the jockey we will connect it to the resistance box. On the other side, negative terminal of battery emitter should be connected to the one-way key, and the one-way key should be connected to the negative terminal of ammeter, and the positive terminal of ammeter is connected to the rheostat, and the rheostat should be connected to the potentiometer. So here you can see that how we connect the whole circuit. Now I will show you how to connect. So once again I am going to repeat the procedure of connection. First positive terminal of battery emitter should be connected to the potentiometer, and the positive terminal of both the primary cell should be connected to the potentiometer. And the negative terminal of both the primary cell should be connected to the two-way key, here you can see that I connect the negative terminal of both the primary cell to the two-way key, and the common terminal of the two-way key should be connected to the negative terminal of galvanometer. Now the galvanometer's positive terminal should be connected to the resistance box, and the resistance box should be connected to the jockey. On the other hand, you can see that the negative terminal of battery
should be connected to the one-way key, and the one-way key should be connected to the negative terminal of ammeter, and ammeter to the rheostat, and finally rheostat should be connected to the potentiometer's endpoint. Here you can see the whole circuit how I connect. Now we will perform the experiment. So we first switch on the battery emitter, then after we will connect the key, insert the key in one-way key. So to test the EMF of Leclanché cell, we have to connect this one key, and then after we have to remove 2000 ohm from resistance box to check the connection is correct or not. तो कनेक्शन चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, जॉकी को पोटेंशियोमीटर के इनिशियल पोजीशन और लास्ट पोजीशन पे कनेक्ट करना होगा, टच कराना होगा, जिससे गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों साइड होना चाहिए। अगर किसी वन साइड डिफ्लेक्शन दिखाता है तो हमारे कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, दैट मीन्स अपना कनेक्शन करेक्ट नहीं है। सो पहले हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं कि हमारा कनेक्शन सही है या नहीं है। स्विच ऑन किया तो उसके पहले हम एमीटर की रीडिंग देख लेते हैं। तो लिस्ट काउंट जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके टोटल डिवीज़न से फर्स्ट रेंज के डिवीज़न से 10 को डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट रेंज हमारा 0.5 है, तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.05। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 0.2 एम्पियर, क्योंकि पॉइंटर हमें फोर्थ लाइन शो कर रहा है। 0.05 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 0.2 एम्पियर। तो मैं यहाँ पे की को निकाल देता हूँ और लेक्लांचे सेल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ सर्किट में। अब हम चेक करते हैं कि कनेक्शन करेक्ट है या नहीं है। इनिशियल पोजीशन पे राइट साइड में डिफ्लेक्शन बता रहा है, यू कैन सी, और फाइनल पोजीशन पे लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन बता रहा है। इसका मतलब हमारा कनेक्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। तो इसको मैं दोबारा से इंसर्ट कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे कि जॉकी को पोटेंशियोमीटर के पूरे वायर पे स्लाइड करेंगे ताकि हमें गैलोमीटर 0 रीडिंग शो करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अलग अलग पोजीशन पे जॉकी को टच करा रहा हूँ, तो उसके डिफ्लेक्शन मुझे अलग अलग मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे गैलोमीटर का नल पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे उसकी रीडिंग 0 बताती है। जिस लेंथ पे गैलोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा वो लेंथ हमारा हो जाएगा L1, जो कि होगा लेक्लांचे सेल के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे लेक्लांचे सेल को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमें 0 डिफ्लेक्शन L1 इक्वल टू 217 सेंटीमीटर पे मिलता है। तो इस प्रकार से हमें लेक्लांचे सेल के लिए गैलोमीटर का 0 डिफ्लेक्शन L1 इक्वल टू 217 सेंटीमीटर पर मिल जाता है। अब हम लेक्लांचे सेल को सर्किट से डिसकनेक्ट कर देंगे और 10 सेल को सर्किट में कनेक्ट करके सेम प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेक्लांचे सेल को डिसकनेक्ट कर देते हैं। अब मैं 10 सेल को सर्किट में कनेक्ट करूँगा। उसके पहले मैं बैटरी को ऑन कर देता हूँ। तो अब मैं 10 सेल को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो पहले हम इसका कनेक्शन चेक कर लेते हैं। 2000 ओम मैंने रिमूव किया रेजिस्टेंस बॉक्स से,
अब जॉकी से मैंने फर्स्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे टच करा के दोनों साइड का डिफ्लेक्शन कैलकुलेटर में देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड डिफ्लेक्शन मिल रहा है, दैट मीन्स आवर सर्किट इज़ करेक्ट। सो मैं वापस से की को इंसर्ट कर देता हूँ। अब हम इसका ज़ीरो डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें फाइंड करना होगा L2 लेंथ। तो जिस लेंथ पे हमें इसका ज़ीरो डिफ्लेक्शन मिल जाएगा वो लेंथ हमारा L2 कहलाएगा। डिफरेंट पोजीशन पे हमें जॉकी को स्लाइड करके टच करके जस्ट देखना है कि हमें गैलोमीटर का ज़ीरो डिफ्लेक्शन कहाँ मिलता है। फिर हम उस लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, मेज़र कर लेंगे। वो लेंथ हमारा हो जाएगा L2 फॉर 10 एलसीएल। तो यहाँ पे हमें इसका लेंथ मिल गया है 139.5। तो इस प्रकार से हमें लेक्लांचे और डैनियल सेल के लिए लेंथ L1 और L2 मिल गया है। इसी प्रकार से हमें सेम प्रोसीजर रिपीट करके 2 से 3 बार रीडिंग लेनी होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। तो आप 2 से 3 बार रीडिंग ले सकते हैं यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं हमें सभी रीडिंग्स हमें कैसे मिलेंगे और उसके ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे कैलकुलेट करना है। Thus we get the all readings for this experiment. Here you can see the balance point when Leclanché cell in the circuit. The L1 is 217 centimeter and balance point when Daniel cell in the circuit L2 is 139.5 centimeter. तो इन दोनों EMF का हम रेशियो फाइंड करें तो ये हमें मिलता है 1.55। इसी प्रकार से बाकी के 2 रीडिंग से भी हमें EMF के रेशियो 1.55 मिल जाता है। तो इसका एवरेज वैल्यू भी हमें 1.55 मिलेगा। आई होप आप लोगों को पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।